पढ़ाना स्टार्ट क्यों था? ठीक है। So still terminologies continue for the design of the general bearing. So in the previous class we have completed up to the Sommerfeld number. So now after that, what is the amount of the heat generated in the general bearing? Then after that we calculate the heat dissipated. So in the bearings, take care that overheating does not occur. Bearing चाहे जो जॾहिं overheat थींदो त पोइ वरी वधीक issue थींदा. So bearing does not overheated. So how we calculate the amount of the heat generated? Okay. So the heat generated in a bearing is due to the fluid friction and friction of the parts having relative motion. Parts having the relative motion. So mathematically you can calculate the heat generated by this Qg. Qg, what is this Qg? Qg means amount of the heat generated. G is generated, amount of the heat generated, and mu coefficient of friction. W load acting on the bearing. V rubbing velocity in meter per second, which is equal to pi dn divided by 60. And this is the W is the load or force, which is equal to pressure on the bearing multiplied by projected area. Because force is equal to pressure multiplied by area. So here you can see P denotes for the pressure, L for length of the bearing, and D is the diameter of the journal. Okay. So by using or by adopting this formula, you can calculate the amount of the heat generated. So after the thermal equilibrium has been reached, what is thermal equilibrium? Thermal equilibrium is defined as the amount of the heat generated is equal to the amount of the heat dissipated. माना जेको अमाउंट जनरेट थियो बेरिंग में वो सेम डिसिपेट थियो आउटर एनवायरमेंट में सरफेस में तो दैट बेरिंग डज नॉट ओवरहीट. So if there is a difference in equilibrium condition, then overheating occurs. And the heat will be dissipated at the outer surface of the bearing at the same rate at which the heat is generated in the oil film. So if both are equal, then that is called the thermal equilibrium. Now again, the amount of heat dissipated will depend upon the temperature difference. अदा कॾहिं थींदो आहे त बेरिंग जो टेम्परेचर मिसाल जी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो हाई आहे तव्हांजो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर तव्हांजो घटि आहे. So always heat transfer from the higher temperature region to the lowest temperature region. ये हमेशा डिफरेंस पे फ्लो करेगा. जब जिस तरफ से एयर फ्लो टेम्परेचर कम होगा उस तरफ टेम्परेचर फ्लो करेगा. सेकेंड, साइज एंड मास ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस. आपके बेरिंग का सरफेस कितना है कि वो जो हीट डिसिपेट करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है. And on the amount of air flowing around the bearing, whether you provide artificial cooling or not, or there the bearing operates under the fully ventilated environment or not. So this totally depends that if we operate the bearing in a closed space, that bearing will be overheated quickly. अदा common sense है, सही point clear है. जी सर. माना तव्हांजो आहे त एयर फ्लोइंग केतिरो हुनखे असां हिकिड़ो बेरिंग था हलायूं हुन में हिकिड़ो फैन हलाए छॾियूं, बेरिंग ओवर हीट न थींदो छो जो असां हुनखे एयर थ्रो ॾियूं था. तव्हांजो ॿाहिरि जो टेम्परेचर केतिरो आहे, एम्बियंट टेम्परेचर केतिरो आहे ऐं हुनजो रेडिएटिंग सरफेस जो जे पॉइंट ते तव्हांजो एयर कॉन्टेक्ट में आहे
या तो मोटरसाइकिल में एयर कूलिंग सिस्टम है, गाड़ी में वाटर कूलिंग सिस्टम है, मोटरसाइकिल में चाहे जो उते वरी फिन्स लॻल हूंदा आहिनि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. So, however, for the convenience in bearing design, the actual heat dissipating area may be expressed in terms of the projected area of the journal. Projected area of the journal will be the length into D. So, the contact में तो bearing the housing sa. So that will get the overheating. So amount of the heat dissipated. How we decide that thermal equilibrium occurs. So if we know the value of the amount of the heat generated, if we know the amount of the heat dissipated, if both values are equal, we say now thermal condition exists. But if there is a difference in between the two temperatures, then we say now thermal equilibrium does not exist. Thermal equilibrium condition to I कोन. पर असांखे पहिरें ॿई फार्मूला खपनि, ॿई values खपनि. So by adopting this formula, QD is the amount of the heat dissipated. Amount of the heat dissipated is equal to C. C is called the heat dissipation coefficient. So their values are different from the given range you can select. A is the projected area of the bearing. TB, temperature of the bearing. Temperature of the bearing surface minus TA, ambient temperature or room temperature. Temperature of the surrounding air in degrees centigrade. So if you know, generally C values are given. Okay, energy value to area to L into D. L divided by projected area L into D. TB bearing temperature. Generally this shall be given minus TA. ये भी आपको given होगा. तो आप इस पे पुट करेंगे तो आपको हीट डिसिपेटेड मिलेगा. तो उस हीट डिसिपेटेड की वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है. QG ये जितना आंसर आए उसके आंसर को इसके आंसर के साथ कंपेयर करना है. If both are equal, then we say thermal equilibrium condition exists. So no additional cooling is required. And additional cooling agar requirement na hai, we stop at that point. And suppose QD value ghatta hai and QG value vadhika hai. It means now there is a temperature difference. So in order to bring the bearing in thermal equilibrium condition, you can provide the artificial cooling. Artificial cooling kando or select the design parameters other than the calculated parameters. या तो bearing के redesign कियो या तो bearing के oil change कियो. So the average value of C for general bearing may be taken as for unventilated bearing 140 to 420 watt per meter square per degree centigrade. For well ventilated bearing 490 to 1400 watt per meter square per degree centigrade. So generally, it has been shown by the experiment that the temperature of the bearing TB is approximately midway, means average, between the temperature of the oil film TO and the temperature and the temperature of the outside air. The formula में है ना, TB means bearing temperature. So he say the bearing temperature is almost equal to the 1/2 TO minus TA. TO is the temperature of the oil minus TA. So by using this formula, you calculate the average. So TB minus TA is equal to this answer. So note, for well-designed bearing, the temperature of the oil film should not be more than 60. For well-designed bearing, the temperature of the oil film bearing na to chahe, oil film to chahe, should not be more than 60 degrees centigrade. Otherwise, the viscosity of the oil decreases rapidly. Means we know that the temperature increases, viscosity decreases.
जेतिरो टेम्परेचर तव्हां वधाईंदो ऑयल विस्कस न थी रहंदो. The temperature of the oil film is often called as the operating temperature of the bearing. So in case the temperature of the oil film is higher, जेकर oil film जो temperature high थींदो, so then the bearing is cooled by circulating water through coils built in the bearing. And water jacket, we provide the water jacket. So throughout that water jacket, we can circulate the additional water or oil. तो उनमें ऑयल भी सर्कुलेट करे सघो था, तो उनमें वाटर भी सर्कुलेट करे सघो था. हाणे उहो आहे त केतिरो वरी अमाउंट असां सर्कुलेट कयूं. How much amount we circulate in order to bring the bearing in thermal equilibrium condition? You need to calculate the mass of the oil to remove the heat generated at the bearing. May be obtained by adopting this formula. QT. QT means heat taken away. Heat taken away by the oil. जो additional oil हम circulate करेंगे एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल कूलिंग पे, वो कितनी अमाउंट चाहिए पर सेकंड, हम उसको कितना सर्कुलेट करें कि वो टेम्परेचर को थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाए, इज इक्वल टू m mass of the oil, s specific heat of the oil, t is the difference of the temperature. and specific heat छा है, थर्मोडायनामिक्स में तव्हां पढ़ी आयो. It is the amount of the heat required to raise the temperature of a unit degree of an object to unit degree centigrade. Okay, and te formula tawata kiya to now all are the stepwise procedure. So we follow the design procedure for general bearing. So now we know that we have the formulas, we have different methods, we require certain parameters. So if you follow this method of the design, you can easily select the design parameters of the general bearing. So what are these steps? जॾहिं तव्हांखे को प्रॉब्लम सॉल्व कंदो या तव्हांखे को न्यूमेरिकल अचे थो, तव्हांखे को टास्क अचे थो, how you select the general bearing, you follow these steps. Step number 1. The one chai, determine the bearing length by choosing a ratio of L upon D from this table. So tables are provided to you. ताकि सब tables provide होंदा. And tables provide होंदा, उन्हीं table में ताकि go to the particular type of the general bearing. Means type depend करनो वाली application ते, ताकि केड़े application ते apply करनो है. So from that table you can select. If I go back there from this table, so all these tables shall be provided to you. It is only so that Baba, L upon D there. L upon D. And suppose you target kape ko the railway cars jalai, axle jalai bearing kape. So L upon D ratio is in between 1.8 to 2. So in between this range you can select any value. का भी value असां select कंदासीं त उन जी वरी Zn upon P ही हूंदो, C upon D ही हूंदो. Suppose कयो तव्हांखे machine tools जे लाइ त 1 to 4 means तव्हांखे centrifugal pumps जे लाइ त 1 to 2. So there are examples which are based upon the centrifugal pump. So उन जे rotor में असांखे bearing खपे, तो 1 to 2 means I can take 1.5, I can take 1.2, 1.1, 1.3, but you take up to 2. दो तक आप ले सकते हैं इस पे. So this is the step number 1. Determine the bearing length. अगर मैं suppose कहूँ diameter, I know that L upon D ratio is equal to available value in the table. I simplify that relation, I get the length. Then after that, second step, check the bearing pressure. P is equal to W upon L into D from this table for probable satisfactory value. I see pressure. Suppose here is centrifugal pump. So maximum bearing pressure column 0.7 to 1.4. So take the value from this range.
इन रेंज में का भी वैल्यू असां खणंदासीं for the given L upon D ratio. So after that, assume a lubricant from the table number 26.2. First chapter just start make a table your for different grades of the oil, different viscosity or different temperature. So that table also provide to you. वो टेबल भी तव्हांखे गिवन हूंदो, अदरवाइज ऑयल जो टाइप या टेम्परेचर तव्हांखे गिवन हूंदा. And its operating temperature TO means temperature of the oil. This temperature should be between 26.5 to 60 with 82 degrees centigrade as maximum for high temperature installations such as steam turbine. For normal operation you can consider 26.5 to 60, बट पॉसिबल जो है वेरिएशन वो 82 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप जा सकते हैं हायर एप्लीकेशन के लिए लाइक स्टीम टर्बाइंस. हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने L upon D रेशियो सेलेक्ट किया. हमने बोला इस जनरल का लेंथ ये होना चाहिए. उसके बाद हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. प्रेशर एक तो कैलकुलेट होगा, एक गिवन वैल्यू है, तो आपको गिवन वैल्यू टेबल से लेना है, फिर वो प्रेशर के साथ कंपेयर करना है. तो इस पे मैं W की लोड की वैल्यू आप पुट करूंगा, मैं L की वैल्यू पुट करूंगा, मैं D की वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे प्रेशर मिल जाएगा. अगर ये प्रेशर का वैल्यू टेबल के वैल्यू के साथ टैली करता है या कम होता है तो वी से आवर L इज ओके. हाणे पहुचंदासीं L सही आहे, असांजो अजम्पशन सही आहे. जेकॾहिं प्रेशर वधी थो वञे त वी टेक एनदर वैल्यू. 1.5 ते वधे थो त असां 1.6 खणंदासीं. 1.6 ते वधे थो त असां 1.7 खणंदासीं. क्लियर बाबा? छो जो हिते आहे L upon D, तो उन जे करे ही डिवीजन वारो L upon D इज इक्वल टू वैल्यू. तो पोइ वरी उन हिसाब सां डिवाइड कंदासीं न्यूमरेटर ऐं डिनोमिनेटर में, त असांखे वैल्यू डिफरेंस ईंदा. सो आफ्टर दैट गो टू स्टेप नंबर 4. डिटरमाइन द ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ Zn upon P. फिर आपको ये बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कैलकुलेट करना है फॉर द अज्यूम्ड बेरिंग टेम्परेचर, जेका टेम्परेचर असां अज्यूम कयोसीं, एंड चेक दिस value with corresponding value given in table number 26.3. So here you can see so this is the viscosity, this is the column for 28. असां चवंदासीं त हिन जो वैल्यू Zn upon P डिज़ाइन वैल्यू 28 आहे. असां जेको वरी आयल अज्यूम कयोसीं त उन जो वरी कैलकुलेट कंदासीं, पोइ हिन सां टेली कंदासीं, कंपेयर कंदासीं, त ॾिसंदासीं त असांजो ग्राफ कहिड़े पासे वेंदो. So after going to completing step number 4, assume a clearance ratio C upon D from this table. Again, so use the same table. There is a value of C upon D, and also this value is given in range. So C upon D is given 0.013. So after taking all the parameters from the table and checking, determine the coefficient of friction by using this relation. You should remember this formula. Then step number 7, determine the amount of heat generated by using this equation. Qg is equal to mu Wv. Determine the amount of heat dissipated. And केतिरो जनरेट थियो, केतिरो डिसिपेट थियो. And ॿिन्ही खे टेली करण खां पोइ ख़बर पवंदी. त now step number आहे determine the thermal equilibrium. We tally these two, Qg with Qd. If both are equal, then we say thermal equilibrium condition exists. No need of the artificial cooling. In case the heat generated is more than the heat dissipated, then either the bearing is redesigned or it is artificially cooled by the water. या तो bearing के redesign कियो after following these steps, or you can redesign the bearing या artificial cooling supply कियो. Any question regarding this design procedure?
Baba, any question? So don't confuse about the tables. All the values whatever we select from the table shall be given to you, or table shall be provided to you. ये फार्मूला तो आगे याद करना है. Clear, Baba? Can I go on the next slide? Yes, sir. ये फार्मूला तो आगे याद करे चलिए उन्हें आपको ही स्टेप्स ताम बाका सीक्वेंस. Now we solve one example. I hope that you understand. Now we say this is example number 1. This is example number 1. In book you can find this example in 26th chapter, example number 1. Design a general bearing for a centrifugal pump. So this is the type of the general bearing. This is type of the or the application. किसके लिए यूज कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए. From the following given data. आपको ये डेटा गिवन है. लोड ऑन द जनरल 20 किलो न्यूटन का आप कहें, मैं पंप के नए पेपर पे ऐसे हम चेंज करते हैं, 20 किलो न्यूटन भी लिख सकता हूं. ये 20 न्यूटन है, मैं 25 न्यूटन भी लिख सकता हूं, मैं 25 किलो न्यूटन भी लिख सकता हूं. ओके. स्पीड ऑफ द जनरल इज इक्वल टू 900 आरपीएम. यहाँ पे देखें आपको टाइप ऑफ द ऑयल इज SAE10. तो अगर ये ऐसे टाइप का गिवन है तो जो विस्कोसिटी वाला टेबल है वो नहीं होगा आपके पास. टाइप ऑफ द ऑयल इज SAE10 because I mention here oil number for which the absolute viscosity at 55 degree centigrade. यानी ये ग्रेड जो ऑयल में यूज कर रहा हूं इसका विस्कोसिटी 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये है. Ambient temperature of the oil is equal to 15.5 degrees centigrade है. Maximum bearing pressure for the pump is equal to 1.5. तो ये आपको required है 1.5, यानी इतना प्रेशर होना चाहिए. तो after calculation we compare our calculated value with this answer. पोइ असां उनखे कंपेयर कंदासीं हिन प्रेशर सां. Calculate also the mass of the lubricating oil required for artificial cooling. So from this statement, he जो statement है आखिरी. So from this statement, it is clear that there is overheating. The overheating थींदो तॾहिं ही क्वेश्चन चवे पियो त artificial cooling जे लाइ मास केतिरो असां सर्कुलेट कयूं, फ्लो रेट, मास फ्लो रेट. समझ में अचे पियो न बाबा? If rise of the temperature of the oil be limited to 10 degrees centigrade, then heat dissipation coefficient is equal to 1232 watt per meter square per degree centigrade. Any question regarding this statement of the question? ये question समझ में आयो? तो जनरल बेरिंग हिकिड़ो डिजाइन करणो आहे पंप ऑपरेशन जे लाइ. पंप में लोड उते आहे 20,000 न्यूटन्स. स्पीड ऑफ द जनरल जेको शाफ्ट आहे उनजी आहे 900 आरपीएम. ऑयल कहिड़ो फिल्म जे लाइ यूज़ कयूं पिया? SAE10. उनजी विस्कोसिटी 55 डिग्री सेंटीग्रेड ते ही आहे. एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ द ऑयल 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड आहे ऐं पंप में प्रेशर ही आहे. क्लियर? कैन वी गो फॉर सॉल्यूशन? जी सर. हाणे अचो था सॉल्यूशन ते. वी फॉलो द स्टेप्स. ओके. हाणे त छा आहे जो दीज आर द गिवन डेटा. ही डेटा तव्हांखे गिवन आहे. स्टेप नंबर 1 छा थो चए हिते? तव्हां ॾिसो. Determine the bearing length by choosing a ratio of L/D from this table. हाणे ही त चए थो टेबल मां खणो, पर असां वटि डायामीटर बि कोन्हे, असां वटि एल बि कोन्हे. ॿई शयूं अननोन आहिनि. Step number 1. First of all, let us find the length of the general L by assuming a diameter of the general as 100 millimeter. So why we assume this? Because it is not given. ये आपको given नहीं है. अगर मैं L/D रेशियो टेबल से कैसे पिक करूंगा? ठीक है.
Now from table number 26.3, we find that the ratio L upon D for centrifugal pump varies from 1 to 2. Range given है, वो तो चाहे range है 1 to 2. हाणे तव्हां ते डिपेंड थो करे तव्हां कहिड़ो बि खणो 1 खणो 1.1 खणो 1.2 खणो 1.3 खणो बट यू कैन गो अप टू द 2. तव्हां 2 ताईं वञी सघो था. So let us take L upon D is equal to 1.6. So this author takes this. So L is equal to 1.6 D. L upon D. So L upon D is equal to 1.6 times D. So if you simplify this, you will get this answer 160. Now you say that diameter is 100 millimeter and length is 160 millimeter. So हिते ही पॉइंट नोट कर असां ही शय अज्यूम कयोसीं इन जी वेरिफिकेशन थींदी. So because 100 is not final. 100 तव्हांजो फाइनल जॾहिं थींदो तॾहिं तव्हांखे प्रेशर ॿिया पैरामीटर्स टेली कंदो. If all the values are under the limit, then you say our assumption is okay. Come on the second step. Calculate the bearing pressure. Check the bearing pressure P is equal to W divided by L upon D. Check करणो आहे. जेका बि वैल्यू असां अज्यूम कयोसीं L upon D रेशियो कढियोसीं उन खां पोइ उनखे चेक करणो आहे. P is equal to W divided by L into D. So load is 20,000 Newton, sorry. L is equal to 160 into 100. Answer is equal to 1.25. केतिरो आंसर आयो 1.25. जॾहिं त तव्हांजो हिते गिवन प्रेशर जेको आहे पंप जो 1.5 आहे. So this pressure is 1.5. So our calculated answer is less than this. So we say since the given bearing pressure for the pump is 1.5 Newton per millimeter square, therefore the above value of P is safe. If 1.25 घटि आहे न 1.5 खां, so we say this is safe. And pressure safe आहे, it means that the dimensions of L and D are safe. Second point clear? जी सर. ये चेक जरूर करणो आहे. हाणे सपोज था कयूं वी अज्यूम दैट हाणे तव्हां अज्यूम कयो त ही P जो आंसर 1.5 खां मथे अचे हा. If this 1 point, let's say I say our calculated pressure is equal to 2, असांखे 2 अची वञे हा त हाणे जॾहिं टेबल में चवे पियो प्रेशर हुजे 1.5 सेंट्रीफ्यूगल जे त इट मीन्स आवर अजम्पशन इज नॉट सेफ. पोइ असां वरी L upon D 100 कयोसीं न इन खे असां चेंज कयूं आहे. पोइ ॿियो को वैल्यू खणो आहे त जेको प्रेशर हुनजे विदिन लिमिट्स अचे हा. हाणे अचूं था वरी स्टेप नंबर 3 में. स्टेप नंबर 3 छा थो चए अज्यूम ए लुब्रिकेंट. हाणे छा अज्यूम असां ही स्टेप आहे सिंस इन दिस क्वेश्चन लुब्रिकेंट इज मेंशन. हिन क्वेश्चन में लुब्रिकेंट तव्हांखे मेंशन आहे गिवन आहे. So no need to calculate this step number 3. Directly go to step number 4. Determine the operating value of Zn upon P for the assumed bearing temperature and check this value. यहाँ पे तो टेम्परेचर और वो सब चीज गिवन है. Zn upon P विस्कोसिटी गिवन है 0.017. स्पीड गिवन है 900 RPM. Pressure, safe pressure 1.25. So your value of Zn upon P is equal to 12.24. 12.24 असांजो calculated आयो आहे. Again compare this value with the value given in table. We find that the operating value of Zn upon P is equal to 28. यो 28 किथां आयो आहे हितां खां आयो आहे. This is the value of 28. Here I discussed Zn upon P. So असांजो calculated answer आयो आहे 12.28. But this should be the 28. Yeah, from table number 26, we find that the operating value
of Zn upon P. So because this Zn upon P is very important factor in order to maintain the oil film. सामने में ॾिसंदो ग्राफ में जॾहिं पासे आयल Zn upon P जो वैल्यू इंक्रीज पियो थिए तो ग्राफ में स्टेबल कंडीशन जे तरफ पियो वञे. The minimum value of the bearing modulus at which the oil film will break is given by and minimum 3 times हुजे. 3K is equal to Zn upon P. Therefore, the bearing modulus at the minimum point of friction K is equal to 1 upon 3 into 28, 9.33. हाणे तव्हांजो मिनिमम ऑयल फिल्म रिक्वायर्ड आहे जेको पॉइंट ए आहे उहा वैल्यू हुजणु खपे 9.33. असांजो कैलकुलेटर कहिड़ो आहे 12.24. त ग्राफ कहिड़े पासे वेंदो? This. So K here at a point A, your answer is 9.33. Yeah, minimum. Any घट में bearing operate न थींदो. Since our answer is 12, so this Zn upon P goes here. So from this Q point to P point, it is a thick film lubrication आहे. ऐं असांजो bearing operate थींदो ओ stable condition में थींदो. Unstable न थींदो. Clear है बाबा ये step clear है fourth. जी सर. जो टेबल में वैल्यू गिवन है वो 28 है. हम बोले 3 टाइम्स पे होना चाहिए मिनिमम, तो वो उसका 9.33 बनता है. तो दैट इज मिनिमम हेयर. नाउ दिस 9.33 को आप वैल्यू को बेरिंग मॉड्यूलस भी कह सकते हैं. के ये के की वैल्यू है ना 9.33, यहाँ पे आपके मिनिमम वैल्यू. और मेरा आंसर आ रहा है 12.23. तो 12.23 इस तरफ जाएगा क्योंकि ये एरो आप देख रहे हैं ये इंक्रीज नंबर इस तरफ, ये 0 है, 0 टू ऑनवर्ड. So since the calculated value of the bearing characteristic number Zn upon P is equal to 12.24 is more than 9.33, therefore the bearing will operate under hydrodynamic condition. तो आपका ये स्टेप भी कंप्लीट ओके हो गया. Now from table number 26.3 we find that for centrifugal pump the clearance ratio is this. Step number 5 में ये क्या कर रहा है? Assume a clearance ratio C आपने from table number 26.3. Come on the step number 6. Calculate the coefficient of friction. Step number this. Mu is equal to 33 by 10 power 8 Zn upon P D upon C plus K. So K is equal to 0.002. After that, calculate the amount of heat generated. Qg is equal to mu Wv. Mu Wv. V is equal to pi dn upon 60. So if you substitute all values, you will get Qg is equal to 480.7. Now, heat dissipated. Heat dissipated is equal to a step determine the coefficient of friction, then determine the heat generated, determine the heat dissipated. Comparison. Heat dissipated Qd is equal to this formula CATB minus TA. If we substitute all values, and the TB minus TA is equal to half of TO minus TA. Half TO, temperature of the oil is 55 degrees centigrade. TA, ambient temperature 15.5 degrees centigrade. Answer is equal to 9.75. So QD is equal to 389. And compare Q. QG is not equal to QD. बराबर ना था ना द आंसर. अब देखें ये 480.7 है और ये 389 है, तो ये इट मींस हीट जनरेशन इज मोर.
0209 एनी क्वेश्चन आई समझ में अचे ना? जी जी सर। तो अभी देखिए कितना, अभी जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है जो आपका डिसिपेट हो रहा है सराउंडिंग एयर पे, वो तो कम हो रहा है, तो ये ओवर हीट होगा, लेकिन कितना होगा, टेम्परेचर कितना बनेगा? We see that heat generated is greater than the heat dissipated, which indicates that the bearing is warming up. तो आपको यह bearing गर्म हो जाएगा. Therefore, either the bearing should be redesigned by taking TO, temperature of the oil is equal to 60, यानी आप ऑयल चेंज करें या तो, or the bearing should be cooled artificially. अगर इस क्वेश्चन पे ये नहीं कहता कि कैलकुलेट द आर्टिफिशियल कूलिंग, तो आपको यहाँ पे स्टॉप करना था. तो असांखे हिते बीहणो हुयो, पोइ ही स्टेप को न कैलकुलेट करो. कैलकुलेट आल्सो द मास ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग. सो फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग वरी अमाउंट केतिरो खपे? So formula is QT, heat taken away by the oil for artificial cooling. QT is equal to MST. So M is the mass, and mass ताकि कैलकुलेट करना है. अब अच्छा हिते अचो, हीट जनरेटेड माइनस हीट डिसिपेटेड, जो कितना डिफरेंस है 91.4. तो आपको ये आंसर 19,000 m इक्वेट करना है. किसके साथ? ये हीट टेकन अवे को हीट ओवर हीटिंग की वजह से, ये जितना ओवर हीट हो रहा है 91.4 डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर पे, और ये QT के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा मास. तो 19,000 m is equal to 91.4 mass is equal to this 0.0048 kg per second is equal to 0.288 kg per minute. What this means if we circulate a oil with this mass flow rate means kg per minute, hetero 0.288 kg per minute. अगर ये फ्लो करेगा तो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा. अभी इसी मास को आप इधर रखें वैल्यू, और इसको फिर उसके साथ कंपेयर करें तो आंसर इक्वल आ जाएगा, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट हो गया. एनी क्वेश्चन? So other problems we solve in the next class, inshallah. ये स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो 1900 कैसे ली और टी की वैल्यू कैसे ली 10? ये एक रेंज है, रेंज से आप कोई भी ले सकते हैं. ये रेंज है 1840 to 2100, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के ये है कि ये आपको गिवन होगा. बुक वाले ऑथर ने तो ये उठाया, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं.